Start, ma'am. Good afternoon, everyone. On behalf of WRC, it's my great pleasure to welcome you all on this series of reskilling, upskilling for second inning chartered accountant, which we have started this year. And I'm extremely delighted to see you all here. And we have with us today's speaker, a very good friend of mine, Vandana Dodhia. I welcome her at the platform of WRC and would like to thank for accepting our invitation. Also, I recognize the presence of Pinky Kedia, Regional Council member, again, my good friend, and who has contributed a lot in designing of this series for second inning chartered accountants. So, friends, I'll quickly brief about our WRC theme for this year and forthcoming activities, and then we'll conclude my words here. So this year theme we have designed as a lead for 22-23. So that is a leap towards excellence, achievement, and development. This is a combination of our 5 goals which we have set out for ourselves. And out of this 5 goal, the one goal is how we can become a bridge between the various segment of the membership. So our this series is completely in line with this goal, because in this we are just trying to help them, those women chartered accountant who want to come back again, or maybe who have taken a break, or maybe male members also may be possible. So sometime they may have sometime they have taken a break, and if they want to come back, or if they want to brush up themselves, or if they want to come again into the practice. So for them, how we can equip them, how we can help them in updating their knowledge. So something like that we are trying to do in this series. And for especially for the women members, would like to say that we are working for the providing flexi working hours also, and work from home facilities also. We are in touch with the industry people and firms who are providing a flexi working basis hours or work from home facilities. Will very soon will come up with the complete details once we will finalize it. So the idea is to just untap potential of our female members who cannot move out due to the family obligations. So about activities or upcoming events, friends, a mega event, a big event, our WRC are going to happen in 3rd and 4th of June, which is a regional conference. This is going to be held in the Pune this time. It is generally used to be here in Mumbai. So first time we are trying to organize this in a Pune. This conference generally organized once in a year, and it's really a big event for us. So from this platform, I would like to request all of you, please go through the brochures, event details on our website, and join in a large number. Because if you see the speakers, name of the keynote people or faculties, all are the stalwarts from the profession is going to come under one roof. And this is a very rare chance to interact with them and listen to them. So of course, this is a big event. Then we are coming up with the direct tax refresher course, which is going to happen in this building itself, BKC ICI, Mumbai. Again, it's a landmark and signature event for the WRC. All direct tax related speakers and international tax related speakers will be there. Again, it's a rare chance to listen to them. So my request is to please join in a large number and take the benefit out of that. And second and most important initiative, which we are trying to do at WIRC, is Easy Connect with ICI. So the idea is to talk to the members directly or students directly. So office bearers, chairman, me, and other officials will be there live twice in a month, Thursday 4 to 5. Tomorrow also we are going to be live 4 to 5. So where members and students can
talk directly with us if they have any queries, any grievances, anything in their mind, so they can directly interact with us. Just they have to do it first. They have to send a mail on wrc@ici.in advance what is their queries and exactly what problem they are facing, and we will try to resolve it immediately. So this is from my side, friends, and I'm sure with a very good speaker like Vandana, you all will enjoy and will get definitely will be benefited from this session. So friends, your wholehearted participation is of course its utmost importance. So we need your support also in our programs, and at the same time we all are there to support you. So call us, reach out anytime to us. So thank you so much. So without wasting a time, I can request Vandana to start, and sorry to interrupt you in between today. Yesterday I was not able to make it, so I just took some time today itself. Thank you so much. Thank you, Shweta. It is indeed a pleasure. Let's see, people talk and she's doing action. That's very important. See, plans are always there. You all know पंचवर्षीय योजना भारत में भी बहुत बनती है, but WRC में अब female empowerment, you can see 3 females right bang up here. So the time is changing and people are taking action. That's very important. And today's topic is bank reconciliation is also very important. And we all know, okay, whenever you need automation and tally, Vandana is there. So that opportunity she is giving me, Pinky, or for that matter, Sweta, all of us together, we will take the profession ahead. That is what is our intentions are. And that is why we all are taking out our professional time to work for our own profession. So together we can and we will. Thank you very much. And once again, on behalf of WRC and Sweta, I would like to request कि explore the Pune. Outstation जाना है, कोविड के बाद कुछ बाहर गांव जाने के लिए ही ये प्लान बनाया गया है, तो हम सब फीमेल्स साथ में जाके एंजॉय कर सकते हैं. That is what I can tell. You know, it's like we all can network there when we meet physically. That will help us to grow in profession as well as in personal life. Thank you, Sweta. Thank you. We have our YouTube channel at WRC. So ideally, certain people are keep on asking कि recordings will be available. तो YouTube channel पे आप देख सकते हैं. Don't worry, क्योंकि थोड़ा बहुत miss हो जाता है कभी, या फिर you want to refer second time. So that what WRC is helping. These are the very important lectures which people may like to revisit, and it is available at YouTube channel of WRC. Thank you very much. And now, good afternoon to one and all. What is the excitement level? Sweta, you will not believe. By 10 to 3, there were already 16-20 members were in, you know. So वो हमें भी अच्छा लगता है when we, as a speaker, we want to discuss with them. They are very enthusiastic and they want to really learn and upskill themselves, upgrade themselves. That is very important part. So whatever you do, you must enjoy. So let me share my screen now with you. Today we are going to start with the bank reconciliation. What I am trying to show them is that there is one company. I'll take mine only, display account. I'm starting with auto bank reconciliation, slip book and checkbook, then later on I'll take with 5 to 10 minutes. So once you go to cash book, I have say Bank of Baroda account, and now I will go a little slow. See here, when I press enter, you can see few transactions in the month of April. Now on the right hand side panel, there is R reconcile is there. One underline means Alt R, and 2 underline indicates control you have to press. So whatever button you want to press, 2 highlighted lines means control B you have to press, and 1 underline means you have to press Alt. So Alt R when I press, I will see certain data which has been already imported here, and I want to delete this all unlinked data for you to understand how the data comes here. So गलती से कभी कुछ import हो गया तो उसको cancel करने के लिए भी बटन है. Now how to import?
And what you mean by bank auto reconciliation? Bank auto reconciliation is a concept that your bank gives you the statement in CSV format or Excel format, which you can download from the bank website. Then in Delhi, I want to import. So it cannot be directly imported. First of all, I have to go to Bank of Baroda, that my bank account. And here you have to see bank account number is properly mentioned. Then IFS code is there. Then I have already selected yesterday also I showed them. You have to select this. So tally license has to be there. After that, alter change this yesterday we have seen यहाँ पे yes करके हमने checkbook define किए हैं देखो already have defined 10 checkbooks. Okay, check printing we will take little later because right now I have come for auto bank reconciliation. So enable auto reconciliation. First of all, in your bank account you have to enable this feature. Unless I have enabled, it will not give me that older function in bank statement. So that function will be disabled unless I have activated here in the ledger creation screen. In ledger creation screen, you have to enable auto reconciliation. After you enable, there will be set alter auto reconciliation configuration. If I say yes, it will prompt me folder path for new bank statements. So it will prompt me where I have to put the folder path and whatever statement which is downloaded from the bank website will be saved here. And also Tally ask me folder path for imported bank statements. So new bank statement will be here. And what do you mean by imported? Matlab, once it is downloaded and now we will be next step, we will be importing that data to Tally. So after importing, where you want to save it? Understand? Tally asks you for two folders. First, where you will download from the website, bank website, and save your data. And the second layer, where you will, where you want the imported data of Tally. So if my file name is say Bank of Baroda bank statement for the month of April, once it gets imported, Tally automatically gives hash and INP character will come that we will see once we do the exercise. So now here, year has changed. See, last year my data was 21-22, if you can see. So now this year I am parking the data in 22-23. So I will say Control C, shortcut key is Control C, there space. I will specify path and I will write Control V, enter. So my path will be saved by the Tally, Control V. So wherever you want to keep it, you will save it. So K is my network computer. Right now you can see D is highlighted. So whenever I'm sitting in server machine, the path will be D. But I am now doing from the network machine, so I am taking path K. So while doing the data entry, while importing, also it allows you to change the path. So now it is flexible. Previously in ERP9, Tally was not allowing you to import the data. But there was no flexibility. It was allowing if I go and change in the master. So there was two layers. First, you have to get out of the auto bank reconciliation screen, go to the ledger account alteration screen. There again you have to go and specify this path, and then only you could exercise the next level, next step. But now there is a flexibility. So even if you have forgotten something, you don't have to worry. Within that particular screen also, there's a Alt G function is also there, and here now in auto bank reconciliation, Tally is allowing you to specify path while working on it. While working also you can change it. So it is now saved, and I will just save it. So you have to save the path. अभी मैं escape करती तो वो मेरा path save नहीं होता. So that you have to understand. So I have saved the path. Now I am in this screen of report screen of bank book, and on the right hand side there is a reconcile button is there. Once you press reconcile, now all that 6 transaction is not visible. That is first thing. So if you want to see whatever is reconciled, you have to see basis of value. यहाँ पे include reconcile transaction is there. Just press enter and control it. So it will showcase you the transaction which is already reconciled. In any case, sometimes you want to refer back and you want to check, you can see this way.
These are the transactions which has been already reconciled. Okay, are you understanding? And now I want to import the bank statement. So Alt O is the shortcut keys. Alt O, and then I want to import the bank statement. So I'll click on a bank statement. Now my path is previous one. Specify path, Control V. And now see that 3 files are there. I'll show you path. 3 files are lying there. Okay. There is something 1st April to 30th April, chota, bada, kuch bhi hai. So you can define that I want to import this file. So I will press enter on this. I have downloaded from the Bank of Baroda portal. So after importing, I will also show you the Excel file, how it looks like. So that also some people may have the query or inquisitive. So first of all, let us import the data. You can import the data. So there are 50 transactions and there is additional bank entries 49. So at least one it could reconcile because Tally try to match it certain field and it got one probably okay. So maybe it has been reconciled. Now you may ask how the my file is look like. So this is my file. See, this original bank statement from मैंने कुछ change नहीं किया है, and now our target is this. So this is not, I will be not doing the full one. I will just try to show you how I am functioning on this. Okay. So here when I come, what is on the right hand side, I want to create a voucher. I want to post the transaction to my Tally. So while yellow bar indicates I am standing on that transaction, I will press Alt J. So it is some payment has been done. If I know to which credit card I have made the payment, I can simply post the transaction or I may put it to suspense account, depending on where you want to park that transaction. So, and before we go to the transaction entry, now can you see on 6th April there is a 30,000 and the year also is 30,000. So there are chances that you may have a duplicate transaction bill. So this transaction, if I want to delete, no, this is 6th April, I'm sorry. So I think 6th April is the only transaction which is reconciled. Understand, 8th April it is cash transaction and it is 6th April it is a transfer transaction. So that has been reconciled by automated tally. Understood? Now I want to park this entry. Before parking, I wanted 4th April there is a common entry. There is a common entry. So to avoid the ambiguity, we must delete this transaction. So I'm just keeping my cursor on this. The yellow bar should be here. And then one transaction, if I want to delete, Alt V is the feature, or simply with the mouse, I can click and say yes, so transaction will be deleted from this. With these transactions are right now unlinked. It is not posted to your books of accounts. Slowly, when you start doing the entry, it will get parked. The beauty of auto bank reconciliation is that you will get the voucher date, voucher narration, voucher amount, everything. Only which ledger you have to post, that much exercise only you will be required to do. So I press Alt J to create a voucher. And if I want to find out 15,573 मैंने किसको पे किया है, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा because it is paid through CRED. So you can find out, search in your CRED account if that up. So if I want to park it to the exact account, I can search and put it. So simply give me a minute. Transactions complete हो जाएगा. It will go to the right ledger. Else, अगर पता नहीं है, हमारे स्टाफ को भी हम काफी टाइम बोलते हैं park it to suspense, when you don't know where it should go. But luckily I've got it. So 0590 was the account where I have made the payment. So e-fund transfer, I have to select Control A, Control A. The transaction is done. See, so with the speed you can do that transaction. What I wanted to tell you is that
Okay, moment now 20,000 I want to park, I will press Alt J, and now I have already opened the credit account, so I know it is paid for 6937. So I'm just typing 6937. So Tally also has that flexibility. It is a picking up that characteristic as your ledger. So this ledger has 6937. So I just type 6937 and it's the only ledger. So immediately it will, I'm pressing enter and selecting the same control A, and my transaction, you can see with the fraction of seconds, the transactions are getting posted here. That is what auto bank reconciliation, and the bank debt automatically comes because already when imported the statement, instrument date as well as bank debt was mentioned there. I hope you are understanding. What I did was first went to bank account. In bank account alteration, we specifically selected the bank, which bank is there, and then where the path of bank statement will auto bank reconciliation be activated, and then where the statement will be saved by us from the official website of the bank, and then we imported the transaction Alt O, and then after importing we are parking the transaction by Alt J. Are we understanding? Now, Pinky, can we have some questions? No, Kashmira, it will not affect the data of the previous because it is already now, see, now transaction has been freeze now. Once you have imported the transaction, it has nothing to do. And where the imported file will be going, where imported file will be going. Abhi now once we have imported. So again, if I do कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए करके आपको बाहर आना है, तो जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे पहले देयर वाज ओनली 6 ट्रांजैक्शन, नाउ द ट्रांजैक्शन इज इंक्रीज. नाउ अगेन आई प्रेस ऑल्ट आर एंड नाउ सी वो basis of value, by default Tally is not showcasing you the reconciled transaction, otherwise screen will get piled up. So ideally they don't show you this thing. So how to bring that is on the right hand side, control B feature is there that you click. After that, include reconciled transaction, press enter, so it becomes yes. Once you press enter again, it becomes no. So it is pressing enter on that particular bar and then control A. So it will show you. Ideally we will not keep it on because it will increase the, once you know okay common database is now 14566 is here, so this 14566 I don't want to enter the entry, it's a duplicate entry, so I will delete the unlinked. So that is how it is deleted. So 842 is one more transaction, on 21st April is one more transaction. So first I will go to 21st April, I will go and delete that transaction so that no repetition comes. That care we should take, So delete unlinked. So थोड़ा सा turn around है, but बाकी if there is zero transaction, अभी सबका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को आएगा पूरे साल, you can ask them to send you Excel file of the bank statement, import to Tally, and you can ask your staff to do the data entry accordingly. It will save their time, and accuracy will be there. Only posting to the ledger is required now. Date is coming, narration is coming, and even the amount is coming. So at least data is properly accounted for, that much we can guarantee. Only they should know where it should be parked. 23rd April 6439. I think, I hope you are understanding. It is very easy. Once you start doing, I will also request all the participants, all of you who has Tally Prime, no worry. All of you who don't have Tally license, tallysolutions.com, just go and download Tally Prime 2.1 release. You can work in an educational mode. Maybe it will allow you to work on a 1st of April or a 31st of March. So at least certain features you will able to see for yourself. So here comes, we have deleted the transactions. So I can just simply now go here and just make it no and control it.
and then I want to park the transaction. 13749 किसके नाम से है तो मुझे देखना पड़ेगा. 3883. Alt J I am pressing. So it is asking me where you want to park to 3883. Enter E fund transfer and control A. So within, I think, few seconds the transaction gets entry. That's what the beauty is all about. You want me to now see it, I can keep on doing. मेरी खुद की बैंक की entry कर रही हूँ बैठ के मैं. So all of you have understood auto bank reconciliation. Old and reconcile entry. Very good question. So we have a feature in Tally here when you say alt R. There is something called जो unreconciled transaction है उनका क्वेश्चन है कि यहाँ पे unreconciled transaction है पुराने सालों की and I want to now use this feature of Tally. तो यहाँ पे ना राइट साइड में set bank date करके है. You can set the bank date. How? I will pass one entry for you. एक डमी एंट्री डाल के बताती हूँ आपको. सपोज कि मैं ऐसे ही इसको डुप्लीकेट करके कंट्रोल ए कर देती हूँ. अब हम जाएंगे रिकंसिलिएशन में. So now can you see 4th April there is a transaction reflected here. Understand, Anupama, you have asked the question. Okay, not only one, there are hundreds of transactions you are watching here in your screen. Right hand side, there is something called set bank date. And there you can write instrument. Generally, we don't vouch for instrument date because there may be certain checks. Today you deposit clear after 2 days. So voucher date, some people have that habit of accounting whenever it is reflected in bank. Bank में जो transactions जब भी reflect, whenever it is reflected in bank, they are passing the entry. So you put a voucher date as a date of reconciliation. So they have given 3 types of, Tally has given you 3 options. You can put instrument date, new date और a voucher date. तो आप बैठ के पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं रिकंसिलिएशन मतलब स्टेटमेंट पूरा ना देख के या वाउचर डेट अगर टैलीड है आप मंथ ऑन मंथ चेक करते कि ये मेरा मंथ ऑन मंथ अगर टैली हो रहा है बैलेंस इन ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ओनली इन रिकंसिलिएशन स्क्रीन यू कैन जस्ट गो एंड राइट वाउचर डेट. तो टैली विल पिक अप द वाउचर डेट एंड देन कंट्रोल है तो वो वहां पे पूरा 100 का 2000 ट्रांजैक्शन ऑल्सो इट विल से. फिर वहां पे कभी प्रॉम्प्ट करेगा कि वाउचर डेट कैन नॉट बी लेटर देन दिस डेट. समवेयर सम issue must be there. So particular entry transaction you correct it. Then again same process, set bank date. So whole transaction will be set with the voucher date. So cut off date तक आप कर सकते हो. So that's it. Configuration path. So that what we have understood. See here, I can press escape, control enter, that is a shortcut key. I am taking certain shortcut keys while explaining this. So control enter. See, I was on a list. This is what? This is group display. मैं अभी बैंक अकाउंट में हूँ तो it is a group. Understood? And I want to alter this ledger. मतलब master alter करना है तो control enter is a shortcut keys. I enter, control enter. Then I come here. I have done this. Bank of Baroda I have selected from this. Then यहाँ पे where is it is asking me enable auto reconciliation. You have to press yes. Enable auto configuration yes, and you put the path. Specify path. यहाँ पे जाके specify path करना है. Then you select where you are saving it 2223. Select this control C, then control V, and enter control A and control A. Control A करके मैं बाहर आती हूँ. Control A means accept the screen as it is. Okay. Yes. Enabling checkbook number is separate. These are all separate questions. It has nothing to do with each other.
They are mutually exclusive. So those who want to print the checkbook or automize their life, at least you can track now. Tally will prompt you when only 4 checks are left. No, so after 6, you are running short of checks. ऐसा prompt भी आएगा जब when you are entering 7 number of checks. So that is beauty of tally. मतलब wherever possible they have kept this thing, internal checks or controls. So that's what I enjoy when I learn tally. You know. Okay. So this has been done. Are we happy with this? एक्सिस बैंक का तो मैंने देखो कितना टाइम से काम ही नहीं किया है, पूरा अप्रैल में खाली पड़ा है. Now that was a separate bank. So for someone they want, let us see here Vandana where she saves Axis Bank statement. Have she has downloaded for देखो 21-22 के बाद काम ही नहीं किया है भाई, देखो काम ही नहीं किया है. तो first of all make a pattern के where you want to keep it. आपको चाहिए तो 1 मिनट के लिए आई विल शो यू फास्ट. लेट अस गो एंड एक्सप्लोर. ओके, you go to Axis, you type your account number, zero one eight zero seven four. चलो, it is taking me inside. Then you go to statement accounts. तो मिल गया statement चाहिए ना अपने को. Statements, select detailed transactions, then you select the period. So I want 22 में मुझे चाहिए अप्रैल से. So 1st April. So tally doesn't have कि मैं यही तारीख है तो इतना ही करूंगा. I can have 1st April to 18th May and then I can import transaction. अब मुझे कैसे चाहिए यहाँ पर download. Download is XLS or CSV. Both the format works. We are comfortable with XLS, so we will download XLS. So download started. It will ask me where you want to save. I will put it to my selected path. And while saving, I can give the name कि भाई ये वंदना का है, एक्सिस का है, पीरियड क्या है 01/04/22 May 22 अंडरस्कोर और ये मैंने सेव कर दिया. Now I will go to tally and April month there is nothing, so then reconcile and then ulala, हाँ द क्वेरी अनुपमा, ये देखो डेट लिखा ही नहीं है तो सेट बैंक डेट सीधा वाउचर डेट एंटर कंट्रोल ए, स्टोरी खत्म. ये अच्छा था, लाइव डेमो मिल गया आपको. मैंने एक साथ में देखो डेट डाल दिया, नीचे 52 एंट्री थी, ऊपर भी एंट्री थी, सब जीरोआइज हो गया. स्टोरी एंडेड. अगेन आई विल डू रिकंसाइल, नथिंग इज नाउ पेंडिंग देयर एंड नाउ आई वांट टू इंपोर्ट. अभी in master also I can save the path. That's what I was telling you. There is a flexibility. I can go here and I go here and specify path. Previously there was a problem. You cannot specify path while doing the data entry. Now I can just simply go here, Control C, Control V, enter, enter, and that is this file. C system date 18th May को आपने डाउनलोड किया है, and then I just press enter. रिपीट हुआ फुल ट्रांजैक्शन साइट से मैंने डाउनलोड किया. आई डाउनलोडेड फ्रॉम द साइट एंड नाउ द वर्क इज ओवर, सो वी कैन लॉग आउट. ओके, ऑलवेज एडवाइजेबल टू लॉग आउट एंड क्लोज द स्क्रीन. सो देन यू गो हियर, इट इज इंपोर्टिंग फॉर अस. ये विच व्यू को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इट विल शो यू द ट्रांजैक्शन ऑल्सो. इट डजंट मैटर, आपको तो सब इंपोर्ट करना ही है ना. So reading bank statement file and now importing the transactions. So there were 34 transactions. There was no transaction, so nothing reconciled and additional bank entries 34. Press and to continue. This is how it will come. And then आपको सिर्फ transaction की entry start करनी है. As simple as that.
जहां पे जाके मुझे करना है, आई कैन create voucher, shortcut, aliases. What I have done means I put aliases to the ledger name. So I just press CV, तो सीधा मेरा करंट कैपिटल करके ऐसा एंट्री आ जाएगा. सो टैली में शॉर्टकट्स आर देयर. आप पूरा लेजर के नाम के नीचे जो एलाइस है उसमें शॉर्ट टाइम डाल सकते हो. So that also I wanted to convey. So that's how you can explore Tally and enjoy Tally, working with Tally basically. This is table money. Table wala खाता. So hope you all are now happy. Now we have an income tax season. So immediately full year transactions you take and start doing this. This is one way of doing. Another, in Excel you make a pivot and in Tally you park only pivot की total entry 17 entry डाल के भी आप balance sheet बना सकते हो Tally के अंदर. Are we getting? Yes, when you did reconcile function, it shows all are that I set the bank date, no? And the entire bank, array you can do. See, I showed you. That's why the Tally will not have that whatever statement is from 1st April to 31st March. Data huge रहेगा तो थोड़ा time लगेगा. So it depends. You can import full file, full year file. Okay. Itta, I hope I have clarified. Okay, great. So today's session is very important because it will save lots of your time. Automizing pura banking module, even printing also you can do, and even slip printing also you do. This feature was there from say 15 years back. जब से ये चालू हुआ year की 9 तब से auto bank reconciliation है. See, what was the bank date set for was previous transactions which is unreconciled. Now today you learned this bank reconciliation. You will go at home and your personal accounts also if you want to implement this from today onwards, say 22, 1st April 22. So previous whole transactions will be unreconciled. You will never reconcile it. Or today you go and put auto bank reconciliation on. So what will whatever last 10 years transaction will be unreconciled in your database, you know. So what you have to do, you have to set the bank date. So simply set the bank date is given by Tally to make your life simplified. Understood? Great. So I hope all the participants are with me and we are going marching ahead now. Auto bank reconciliation from my side style is जितना explore कर सकते थे हमने कर लिया है. I will suggest today after the session you go and try to do something. So tomorrow if you have any doubts I can clarify, you know. So live data, कुछ भी आप you have any issues we can address to that. You know? Alt J, whatever this thing is there, you just do it. कितना time लगता है? Hardly take any. Alt J, wherever I have to park, I park it and I say control A, straight away control A कर सकते हो. वो check और refund transfer भी select नहीं करना है तो directly भी कर सकते हो. It's not like you need to do it every time, you know. अच्छा, inventory session is going to come on say next day. कभी अपना inventory on 4th day, right? So I will say in personal books, one more thing I wanted to show you. Say here, this is niche. Most of us are having mutual fund SIP going on. So in my personal book, say Alt J. And then I have made, this is UTI समझो है, या Axis का है, जो भी है, जा रहा है hybrid equity fund. So there I said inventory, yes. Yesterday in F11, we have made yes. I am a chartered accountant where I'm dealing into the trading. So I'm not trading, but still I have made inventory yes, and I used to keep inventory of my mutual fund. Get my point? And then whatever you have got, you can put it. Abhi now I don't remember while I'm doing the entry, I'm confused. Whether it was UTI hybrid equity fund regular.
तो शॉर्टकट कीज इन टैली प्राइम, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज? ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, लेजर में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, wherever you want to go. Are you getting me? So I wanted to see okay, what I am doing is my uh, uh, 1000 SIP is going to this account only, UTI hybrid. That is first thing I wanted to check. Okay, and here is last price was 31.73. I should put ideally watching the statement, but then again I have to go to the statement whether I have downloaded or not. I don't recollect. Mutual fund statement होना चाहिए. See, whenever you are doing the entry, it is a challenge. Everything is readily available or not, so God only knows. And that's why then it goes with the previous entry, whatever you want to do, make it through previous entry. And you should be lucky enough. You should remember the password to open this. So itna ho jaye, life is lucky for me. Huh? So, ये क्या है? इसे परचेज का स्टेटमेंट है. यूटीआई का है क्या इसमें? Can anyone? I don't think so. I'm not so lucky, right? What it shows me portfolio summary. हाँ, ये देखो यहाँ पे डाला है 1000. मुझे ट्रांजैक्शन चाहिए ना. हम लोग अभी जो एंट्री कर रहे हैं उसमें हाउ मच यूनिट्स आई वाज अवॉर्डेड वो कैसे मालूम पड़ेगा unless I see the transaction. Understood? So there is a gap. So how one can make that gap clear? Okay. Now I have a unit of holding 1208. So how I can check? Again, I can go to Alt G. I am in one ledger watching, viewing something. Therefrom, I can go to stock summary. अगर मुझे देखना है तो STOCK stock summary. Stock query भी कर सकते थे. We could have done stock query also. So there are ways and means by which you can go and check. So now where we have added simply 916 was the unit and now 1208 units are there. So balancing figure can be my unit allotted to me. So now I want to calculate something. So immediately I press Control N. Control N is a shortcut keys which allows me to do the calculation. 1208 minus 916.615, where I am minus 916.615. So 291 units. So ideally 291 is what the gap is all about. So you can check the dates and see, okay, what is coming. Okay, by F4 UTI chain आप लोगों. मैं गलत जगह पे था. Nobody stopping me. 1421 to this. So 1178. I was knowing कि मेरा हर मंथ का 30 यूनिट्स आता है, वो दिमाग में होना चाहिए. So now 1208 point कितना है? 1208 राउंड फिगर हो गया, बोलो फर्स्ट टाइम एवर. माइनस your unit is 1178.157. So 29.843 units have been allotted. So these are the workarounds one can do. Abhi beauty what I wanted to showcase. See, right now we are reviewing the stock query. Huh? वहाँ पे calculation भी किया. Now we will press escape once. So we are on the stock screen. Again one more escape. We are on the UTI main screen. Again one more escape. Now I am in a transaction. Which I wanted to see. Again, I will press escape, escape, again escape, again escape, again escape, and I am back to my voucher entry screen. So that is what previously in ERP9 you had to either get out of your voucher entry or save the entry as it is, and then you can come back. Now UTI I know I have to make it 1208. So what I will do, I can press Alt C here
and my calculation is 29.843. I have just pressed up arrow key. I will press enter and it will bring it here. And we all know 999.95 is going every month from that 1000. Or simply you can put 1000 also, because I don't want to disturb the that 1000 transaction. And here is I am with. So I showed you कि exercise जो entry कर रहा है उसको ही करना है, लेकिन beauty क्या था, while doing the data entry I could jump to 3, 4, 5 layers of the report viewing. That shortcut is Alt G is the feature, now new feature in Tally Prime. So all of you, my humble request, move on to Prime. ERP9 में वो feature नहीं है. Kajal, we already have bank entries that I think you can enable and set the bank date. So that can save your this thing. Option to attach invoice in entry. There is a customized tools are available. Attach the PDF. But now in Tally 2.1, you can attach the digital signature, and Tally invoice only you can send to the client through mail and WhatsApp, whatever you want to do. Download the same and do the needful. Okay. So I hope you enjoyed understanding that transactions can, from doing one entry, we can go to the layers of reports. You know, that is the new culture which they have given us. Multitasking, as all female are doing. Here also we did multitasking. But I did the final entry, so I am happy that my reconciled transaction is there. Again, I want to see reconcile. I go here and I see, and I have to keep posting these transactions. I hope that clears my auto bank reconciliation module. Now, today I wanted to show you printing of check, how you will print the check. So, let's see. In utilities, the banking module itself is there. See, check printing, check register, post dated summary, deposit slip, payment advice, bank reconciliation, e-payment. Pura banking module is also available. So to go to check printing, first of all, let us understand in master, there is alter. I'll go to ledger, say Bank of Baroda, जिसका हमने किया. Enable check printing, yes करना है, master. Then alter the configuration. Here is the format. You have to check which kind of check you are holding. So if you are holding this type of check, so you will select that type of check. I'll show you. If my book is like this, the format is like this. Are you able to see this? So I have to decide the format. I think due to that video, it is not showing you, but you need to see the checkbook and understand basically, okay, where is size, you know, the font size, and where is the cutoff is there accordingly. And if none of them is matching with you, none of the format is matching, they have tried to give you as much as possible near, because Bank of Baroda keeps on changing the pattern. पहले वो यहाँ पे 2 प्रिंट कर रहा था, अभी इसमें देखो 2 कलर हो गया, और 5वें में तो ये है, मेरे इसमें नीचे कुछ था ही नहीं. तो माई चेकबुक इज लाइक दिस, जिसमें अच्छा इधर XXX है, अभी इसमें ऊपर एड्रेस आ गया है. सो यू नीड टू जस्ट चेक, एंड इफ नथिंग इज मैचिंग, Tally gives you user defined option also. We used to charge for defining this previously. Now they have started with format, so that work is no more required. But first, this was something called customization, because वो बैठ के वो ruler लेके you have to take the width of check and decide and put. Ideally, you need to cross check and sample check print करके फिर आप वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे कंपनी नेम ऑन चेक अगर लिखा रहता है, कंपनी का नाम वो डालता है. प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक नो, क्योंकि नाउ प्री प्रिंटेड नेम इज कमिंग. सो सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी या कुछ लिखना है, डायरेक्टर लिखना है, तो एवरीथिंग इज नाउ देयर. सो वी डोंट जनरली मेक इट. एंड हाउ दैट चेक विल लुक लाइक, सो दिस इज हाउ द चेक विल लुक लाइक.
So when you will print, it will print like this. Account payee comes, that you have to define while whether you want a cross check, and then the company's name and the amount, and then just print it. Okay. So A4 वाले printer में भी check tear the check to insert, and then it will print. Okay. Happy? Any question? And then when I want checkbook printing, that I train you. Okay, fine. This is done. Now we want to learn the slipbook printing. So if I have any check to be given to the bank, display, आजकल वैसे चेक तो आते नहीं है, ट्रांसफर आ जाते हैं, ई ट्रांसफर आते हैं. Let me look for you if I get any check entry for that matter. कोई चेक आया है क्या? नहीं भी आया है तो इसको हमें सिर्फ प्रिंट करना है ना. Deposit slip, Bank of Baroda 6439. So it will पूरा register बनता है यहाँ पे. It will ask you whether it is printed or not, something of that sort. So suppose के I will take say 28th is the ideal date which I am feel like. So 28th April. See, understand, I am giving you an example. आपकी real life में transactions होगी. So I want to say now, print this. Pre-printed paper पे भी कर सकते हो या normal पे कर सकते हो. When I said Alt P, it will ask me print check deposit slip. Here, see this. Yes, you can go to configuration. Print checks deposit slip. Yes. Print customer copy. Yes. Because bank will put a stamp and give back to me the another portion of it. Date of print. जब भी आपका बंदा जा रहा है उस दिन. Then कौन सा बैंक? Subtitle check deposit slip. Show more. If I enter, it will show me where. आपको company details भी डालनी है, so you can press yes. If it is printed, everything will come. Microsoft print to PDF, digital signature अगर लगाना है नहीं लगाना है, we don't want to, but that feature is now coming. Alt P features. Set preview as default, so we will just have a default preview. Number of copies 1. ठीक है. Page range, top margin, Control A. Now I can have a preview. So Alt Z. See check deposit. It will now what has come. What bank name I have not inserted while doing the transaction. Had I inserted, it would have printed. चाहिए तो हम डाल के अभी देख सकते हैं. You can just simply go and edit it. But यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर, पेन नंबर जो भी था सब प्रिंट किया. Whatever I selected, that it is printing. Basically, that is important. Deposited by sign, and this is banker's copy, and this is customer's copy. So this will save your time. One of my client was very happy. उनको वो टेक्सटाइल मार्केट में इतने चेक्स आते थे, उनको ये हो गया तो he was so happy. And I was then later on happy कि I could save that 1% time just simply writing वो thousands लिखना उतना टाइम सब उनका बच गया. प्लस क्या हो गया, receipt is first packed into the tally and then only it is going for printing. That is the good part of the exercise. I hope you all understood the feature of this thing. आप प्रिंट आपके प्रिंटर में भी कर सकते हो या यहाँ मैं अभी PDF में भी कर सकता हूँ. आपको जहाँ रखा है वहां से फिर प्रिंट कर लो, वैसे भी आप बना सकते हो. अंडरस्टूड? देखना है तो मैं डॉक्यूमेंट में सेव करके बता देती हूँ. 18 मई 22 बॉक्स स्लिप पुराने डेट का है. जस्ट ये एग्जांपल है. डोंट गो बाय द ट्रांजैक्शन बेसिकली. और यहाँ से वो चला भी गया, मतलब vanished from the screen because it is now printed.
So you will like to see how it look like. सेम वो तो जो अभी हमने प्रिंट किया वैसे ही आएगा. So this बाद में वो आप प्रिंट करो, जैसे करना है करते रहो. बैंकर से साथ एक बार बात कर लेना. See, it is a standard format. Understand? It is a pre-printed. So your bank needs to just acknowledge, मतलब approve करना चाहिए. हमारे बंदे को हमने बॉब में भेजा था, so they approved. So we are giving this printed slip only to them whenever check comes. Ideally, you have a word discussion with your bankers. उनको एक फॉर्मेट एक बार दिखा दोगे, मैनेजर से बात कर लोगे, तो आपका काम हो जाएगा. लाइफ विल बी आसान, स्मूथ. ओके. So I have finished up to this. Now hidden feature of Tally, outstanding management. थोड़ा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कल मैंने बताया था आपको. आज हम सीखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट. इसके लिए हमें तो बंद करनी पड़ेगी. जिसमें कुछ लेना देना है वैसे वाली कंपनी दिखाऊं तो आपको समझेगा ना. अब मैंने बंद करने से पहले खोला होता तो ऑटो लॉगिन की वजह से मुझे ये पासवर्ड डालना नहीं पड़ता. अंडरस्टूड? क्योंकि सेम पासवर्ड रहेगा तो अपने आप कंपनी खुल जाती है. तो यू विल वन नीड टू रिमेम्बर दैट, यू नो. 2 minutes. Give me 2 minutes. There's a 2-minute break. Huh? Give me 2 minutes. Sorry, and welcome back. So let me go take you through this company. Now, here what I wanted to show you was outstanding management. How simply, how many of you know in Tally you get outstanding report directly? We go to display, statement of accounts, and outstanding is the heading. In that report, outstanding is also heading. Now, in outstanding, they give me receivables and payables. So, when we go to receivables, it shows me 95,788 consolidated figure. Now, is this right or wrong? This figure is right or wrong, that you need to understand. And to understand that, let me press Alt G and go to balance sheet. I can go to balance sheet or sorry, balance sheet लंबा हो जाएगा. मुझे क्या देखना था? Sundry debtors. I want to see the ledger group
समरी. ग्रुप समरी में मुझे चाहिए सन्ड्री डेटर्स. यहाँ पे मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग 54,608 है. Why I wanted this outstanding management as a subject? Most of the time people misunderstand कि वो जो outstanding वहाँ पे दिख रहा है and यहाँ पे ये दोनों अलग फिगर क्यों आया. Understand the reason why. First of all, our data operator sometimes misses the against reference option, or certain ledgers are created without bills receivable. So then there will be ambiguity. So I recommend that whenever you create a ledger, debtors or creditors at least have bill by bill option. Whenever you receive a payment or issue a credit note, use this against reference feature. Now we need to understand कि यहाँ पे 54,608 है और वहां पे वो क्यों है. तो एक होगा कि मुझे घड़ी 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 जंप करना पड़ेगा. आई हैव टू गेट आउट, गो टू दैट स्क्रीन. तो आइडियली माय एडवाइस विल बी आई ओपन अ न्यू टैब. So we can have alt tab to jump between the screen to understand what is the problem. So I open another tally. To make you understand the difference. Now display outstanding, display statement of accounts outstanding, and we were in receivables, and here it is 95. See, you see the period 1st April to 9th May. Here 1st April to 9th May. We are on the same period, but still the amount is not matching. So what can be the reason? So that management will tally on the right hand side effect ledger wise bills bhi dete hain. You press it ledger wise, so you know then now which are the ledgers which is still showing outstanding as far as this is outstanding report is concerned. So first I am encountering case Rangada. I feel this ledger is not showing me outstanding as far as this list is. So this is a very small list. एक ही स्क्रीन पे आ रहा है and इसमें तो जीरो ट्रांजैक्शन है. तो I am also teaching you shortcuts. So I don't want the first Mahalakshmi to stay on a screen. So Control R to remove. I remove from my screen that particular data. So group tha, it was a total group, so I could remove it. Control R is the button I press to remove that. यहाँ पे देखो लिखा है टैली में remove that line. Control R and Control U to restore. So Control U I press, it will come back. Control R, it will go off the screen. Understood? So जितना छोटा रहेगा तो मुझे देखने के लिए easy हो जाता है कि किस क्लाइंट का कितना बाकी है. If you have a large number of transactions, don't worry. You can do Excel export and you do whatever way you want to do. But try to educate all your clients that this report, outstanding management report total and the debtors total should be same. Otherwise, there is a report error, interest calculation error. Everything will be haywire if you are not sticking to this. So Alt G. Now I will go to ledger. Say KS Rangaga. When you go here it will show nothing. Then I will press F5 bill wise. And now you see the difference. Understood? Why it is pending? Advance आया है, उसके बाद बिल बन गया है. तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में वो खड़ा का खड़ा ही रहेगा. Are you understanding? So we need to pass a journal entry. Now this was a previous year transaction. So I have opened the current year. So first of all, I have to go out on a main screen and do this exercise. So I will keep 2 years open, 21 to 23. Then now display account outstanding में खड़े रहना है तो display statement of account outstanding receivables. And Alt G करेंगे हम, ledger में जाएंगे, ledger vouchers, and then KS Rangada. Here you will go, you will be surprised, nothing is available. You go to bill wise, Alt F1 and stay, keep your cursor on 6th August, then press Alt A. Now Alt A is given here, see, below of this tally screen.
all shortcuts are written. And these has come in another Tele 2.1 version. Previously, Tele had removed these shortcuts when we asked them that we are used to see the shortcut keys. So insert voucher, duplicate voucher, space to select, the everything is here. So you can see here down and take the which are the shortcuts you will want to use. So I want to adjust the reference now, right? So KS Rangada, you need to remember Alt A and F7 simply KS Rangada 4248. So I will have to take a credit to make it debit and another KS Rangada 4248 against reference. I am now crediting, so take the debit. So reference adjustment. So this is the exercise. One way of doing. You could have taken that advance as a reference. It depends. In GST, again, the problem comes that bill number, you want to cross check, you have a problem. So that's why better way I found was to pass a journal entry. So doesn't, it saves me. So now again, when we go here, you can see 95 में से 91 हो गया. See the difference. वो डेटा को ओके कर रहे हैं. Deepika, what do you want me to repeat, beta? See here, once again I will show you. Acha, what that transaction journal entry. Deepika, you want me to repeat journal entry? Say yes or no. Okay. So we will do na. See, 91,000 up. Your journey is 54,000. और भी transactions आएंगे. See what I'm trying. भले मैं आपका 2-4 मिनट लूंगी. Pallav, you raise the hand. What is the question, beta? Pallav, you can speak now. Pallav. हेलो सॉरी कुछ बोल रही थी क्या नहीं पल्लव करके कोई किसी ने रेज हैंड किया ना so we have allowed her to talk so if she wants to speak but his mic was mute अच्छा उनका माइक म्यूट रहेगा चैट बॉक्स में डाल देवे ना okay anyways I am coming back to my reconciliation and let us speed up little fast थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना so we were here लेजर वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो लेजर वाइज देखने से क्या होता है कि यू कम टू नो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग नाउ दिस ऑप्टिक इंटरनेशनल इज नॉट आउटस्टैंडिंग आई नो द मनी हैज बीन रिसीव्ड बाय मी तो ऑल्ट जी लेजर ये जो मैंने ऊपर ना ये सेव यू किया है वो आफ्टर 4:30 वी हैव टू सी ऑल दिस सेव यू कैसे करते हैं दैट फीचर आई हैव टू टीच यू okay and now optic international so you can see money has come sale has been happened in this scenario sale पहले हुआ है पैसा बाद में आया है फिर भी F5 bill wise because it is on account this is on account is creating the fault in the report so please make people understand that they have to attach it to the reference against reference okay 4248 so now I am adjusting this is outstanding management मैंने हाथों हाथ एंट्री कर दिया now ये 8 दिसंबर की जो एंट्री है इसको मैं एक बार कंट्रोल ए कर दूं तो यहाँ से निकल गया अभी I wanted to show you something called outstanding some shortcuts अगर मैं इसको एंटर करके 8 दिसंबर याद रखो एंड इसको मैं ऑप्शनल कर देती हूँ Control A. So now this voucher is no more there. So when you go F5 bill wise, now I know 6th December one bill is outstanding and I want to receive the payment against this bill only. So on the right hand side, there is something called settle bill. Settle bill. Your cursor is on this. You press settle bill. It has come on 8th of December, our Bank of Baroda account and that had come. Now see against reference tally automatic takes. I don't need to do any amount also
I simply have to put whichever bank money has come and my job is done. So that much simplification is available. You need to understand. अब मैंने क्या किया, 8 दिसंबर को वो पैसा कहाँ गया, 22 में चला गया, 8 दिसंबर 21, समझा नहीं समझा? हेलो एवरीवन। सो F5 बिल वाइज वो मुझे दिखा था बिल के वो जीरो क्यों नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग दिख रहा था। 2 साल खुले हैं ना, अप्रैल 21 to 23, तो वो 22 में चला गया। सो यू हैव टू बी अलर्ट। So what I taught you, Tally has an option of bill settlement also. So you suppose 5 bill का payment एक साथ में आता है, you don't need to keep on searching from the drop down against this bill, ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको simply जाना है यहाँ पे, समझो मैं 6 दिसंबर लेती हूँ। What I showed you was F5 bill wise, and right side there is a bill settle bill is available. So you click on settle bill and you put the date of receipt of the payment and adjust it. It will do the work for you. And just enter करने के बाद वो सीधा उसके सामने adjust हो जाएगा. Now someone will ask, वो तो already था, वो फिर से क्यों? But it is automized figure. तो उसी reference के सामने 2 बार दिखेगा payment. If I save this transaction, if I don't save, there won't be an issue. Understood? So I don't need to save this transaction. I just repeated the transaction for the benefit of the participants. It gives me option to adjust the bill payment. So Optic has gone out of this. Are we understanding how it functions? अभी किसका बाकी है? देखो विनस यहाँ पे दिख नहीं रहा है. I can't see Venus here. So I have to go Alt G, ledger with duration, Venus, plastic. So money has come. Bill wise, it is not part. Some entry has been done, see, wrong reference. So all this you as a, if you get assignment of outstanding management, you do all this simplify. If the wrong receipt के time पे fresh reference डाल दिया, which is wrong. It should have been against reference. Debit के सामने वो adjust करना था, simple. So control it. So now it is going out of this, going out of this, going out of this, and going out of my this picture also. Are we getting? And telling का एक है receivable means creditors having debit balance also will come here. Creditors having debit balance. इसका फंडा क्या है? ये रिपोर्ट टैली का मतलब क्या है? Wherever I have to receive the money, it will come here. Even your creditors having debit balance, it will come here. That you have to remember. That is the fun. Suppose receivables will say other control are coming 66. Because I know that it is not part of this. Now who is left over? अगर आपको दोनों मैच करना है ना, देखो यहाँ से ये हो गया 8496, सीख गया 4248, ये भी हमारा नहीं है. वंदना डोडिया इन कंपनी में पैसा नहीं दिया है, बाप रे. कितने का डिफरेंस है? कंट्रोल एन करो, डिफरेंस पहले फाइंड आउट करो. 11,472 ज्यादा है यहाँ पे, ये तो अपने है ही नहीं. So whenever you give the management the report, first you need to cross check my receivable is matching with what I am doing. रिद्धि सिद्धि का पैसा आ गया है, so Alt G, ledger रिद्धि सिद्धि, ठीक है ना? पैसा आ गया है, वो मुझे ध्यान में है कि पैसा आ गया है. आगे पीछे है एंट्री, समझायू कि नहीं समझायू? That finishes the outstanding. Same replica creditors में आपको रिवर्स देखना है.
वो आपको पेबल्स में भी सेम मिलेगा, यहाँ का वहां चला गया होगा तो वो भी वहां पे आ जाएगा। एंड लेजर वाइज जब मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे लेजर वाइज प्रिंट, अच्छा एजिंग भी है, एजिंग मेथड, यहाँ पे एजिंग बाय बिल डेट कर दिया, 180 दिन से ज्यादा कौन बाकी है वो रिवर्स करने का रहेगा एट द ईयर एंड। ड्यूरिंग द ईयर तो रिवर्स करने का टाइम नहीं रहता, वो जीएसटी इनपुट क्रेडिट क्लेम किया है, वो क्रेडिटर्स को 180 दिन के बाद पेमेंट नहीं किया है, एज ऑन इट इज ईयर एंड यू कैन रिवर्स द क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर भी वो स्पैन लेते लेते टाइम जाता है, वो फिर अगेंस्ट रेफरेंस अगर सबने ठीक से डाला है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है, बट सिंप्लिसिटी ईयर एंड इज द बेस्ट पार्ट। 180 डेज वो एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग मोर देन सर्टेन डेज है कि नहीं, 45 डेज में एमएसएमई को पेमेंट करना है, so all that can be done, reporting can be done from this aging date, but the only issue is that against reference should be clearly and properly accounted for. That is my humble request. Okay, follow. Thanks. थोड़ा सा गुजराती एक्सेंट आ जाएगा, pardon me for that. So I hope you guys like this, that there is a outstanding management interest calculation. Yesterday also we had seen what do you mean by reverse journal, and the same you have to start in certain time. Okay. Okay. So where are we now? Hope this is an interesting session and you are learning things which you wanted always to learn. यहाँ पे देखो मैंने कंट्रोल भी क्यों दबाया, टाइप ऑफ बिल्स पेंडिंग बिल्स है, कभी आपको ओवर ड्यू बिल्स सिर्फ देखना है तो वैसे भी टैली में फीचर्स है। आई जस्ट वांट ओवर ड्यू का रिपोर्ट तो वैसे भी निकाल सकते हो, पेंडिंग मीन्स एवरी बिल विल कम इनटू दिस थिंग। और पीडीसी चेक भी आता है तो यू कैन राइट ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग टुडे एंड इट इज अ पोस्ट डेटेड वाउचर, तो चेक जिस तारीख का है वैसे एंट्री हो सकता है। yesterday tomorrow when we learn GST na, someone should remember to me to give you voucher class, remind me. Yesterday we could not make voucher class because unless you create certain amount of ledger na, class will not function. तो जीएसटी मॉड्यूल जब हम क्रिएट करेंगे कल, जीएसटी के 9, 10, 12 लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम वाउचर क्लास भी क्रिएट करेंगे, so that some of you can remind me if I forget to teach you. Okay. इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया आपका, फिर भी इसमें अभी इसमें F11 में देखिए फीचर्स देखो कितने कम है, नथिंग हैज बीन एनेबल्ड, तो शो मोर फीचर्स यस करूंगी, फिर देखती हूँ यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं है, तो ये कंपनी में हमको वो डेटा नहीं मिलेगा। सो लेट मी टेक यू टू अनदर कंपनी where there can be some report where you have loan accounts, interest calculation। 2 मिनट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो फिर से दूं ना आज, क्योंकि वैसे मैंने कल दिखा दिया था आपको, फिर भी अगर आपको चाहिए तो वी कैन टेक अप सम ट्रांजैक्शंस, या हमारी जो खुद की कंपनी कल बनाई थी उसमें लोन रिसीव करके भी हम कर सकते हैं ना। हमारा ये कल हमने टैली बनाई थी, व्हाट वी क्रिएटेड, specify path, control V, enter. So we had created workshop on Tally WRC, अपना पासवर्ड, ये बहुत टैक्सिंग रहता है ना डाल देना। सो यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले स्टेटमेंट स्टेटिस्टिक्स में जाओगे तो हमारा लेजर्स खाली 5 बने हुए हैं, एक बैंक है, एक एफडी है जिसका मैंने बताया था, जैसे कि अभी अनसिक्योर्ड लोन भी आती है आपके पास, और मैंने फिर इसको ऑल्ट के करके ऑल्टर किया था क्या, 17 मई को मैं 1 अप्रैल करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे परेशान करे नहीं, ठीक है। ओके, देन हम थोड़ा ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो समझो मैं वाउचर में डायरेक्ट चले गए, F6 में चली गई, आई प्रेस्ड F6 फॉर रिसीट, नाउ से बैंक ऑफ बड़ौदा में you are getting, so while I am in a data entry screen, I'm giving you shortcuts, I'm taking shortcuts also together, alt C to create voucher, most of you know, but कोई आज पहली बार देख रहा है तो उसके लिए ये जरूरी है जानकारी कि while doing the data entry I can create the ledger,
pressing Alt C. Now say loan UL unsecured loan number 1 अंडर ग्रुप सिलेक्ट करो अनसिक्योर्ड लोन एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कीजिए इंक्लूड ट्रांजैक्शन अमाउंट एडेड फॉर अमाउंट डिडक्टेड और समझो 12% का रेट है 365 डेज अ ईयर ऑल बैलेंसेस टीडीएस डिडक्टिबल यस बट वो कल बताना था अभी ठीक है कल ही बता देती हूँ इसको कल हम एक्टिवेट करेंगे जब टीडीएस मॉडल में जाएंगे क्योंकि वो हम तो जब लेजर क्रिएट व्हेन यू क्रिएट द लेजर ना that time only master should be created properly so everything falls in place rightly so 1 lakh loan you have received F2 करेंगे 1 अप्रैल को रिसीव कर लेंगे ताकि there is some interest you will get and then again suppose अब कोई बोलता है कि हमें डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं डिस्प्ले अकाउंट लेजर आई एम इन लोन अनसिक्योर्ड लोन अभी इसी को मुझे डुप्लीकेट करना है बट लोन पार्टी सेकेंड ऑल 2 is the feature so date everything will come here now suppose कि मुझे 5 तारीख को पेमेंट आया तो मैं 5 तारीख लिख सकती हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे अगेन ऑल्ट सी के बाद अभी मैं जो थोड़ा और लेजीनेस है कि मुझे लोन अनसिक्योर्ड लोन पार्टी का नाम वही है थोड़ा एक दो कैरेक्टर इधर उधर है तो कंट्रोल आर इट विल रिपीट द प्रीवियस whatever I typed control R I press and I will just press 2 and simply I can go ahead activate interest calculation हर time you have to take care you have to write this क्योंकि you are defining this you keep defining this here I received say 2 lakhs rupees and I save it आपके पार्टनर्स भी होते हैं पार्टनर्स कैपिटल भी आता है तो वो लोग को भी करंट कैपिटल में आपको इंटरेस्ट देना है तो हाउ वन कैन डू सो हम जाएंगे क्रिएट में सबसे पहले ग्रुप में जाएंगे हम करंट कैपिटल पार्टनर करके एक ग्रुप बना देंगे अंडर कैपिटल अकाउंट सो फर्स्ट फिक्स कैपिटल दैट इज आल्सो माय ग्रुप आई एम क्रिएटिंग अ ग्रुप so you need to create a group under the main capital account दोनों ग्रुप क्रिएट हो गए फिर मैं लेजर में जाऊंगी अब मुझे लेजर क्रिएट करना है मिस्टर ए पार्टनर नंबर 1 अब वो नीचे तो अनसिक्योर्ड लोन आया बट मुझे फिक्स कैपिटल पार्टनर तो एक हो गया मिस्टर ए पार्टनर अब ये नाम मुझे 2 बार आएगा तो मैं यहाँ पे डैश करके फिक्स डाल देता हूँ तो मुझे एंट्री करने के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिक्स कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं देने वाले हैं हम करंट कैपिटल पे देने वाले हैं ऐसा हमने हमारी डीड में लिखा हुआ है कंट्रोल आर एंड नाउ मिस्टर बी इज द पार्टनर ओके एंड फिक्स कैपिटल इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है तो मैंने कंट्रोल है सिंपली सेव कर दूंगी ओके okay now control R and now fix की जगह पे हम लोग कर देंगे करंट and now I have already created current capital partner अगर ये created था और नहीं created होता तो यहाँ खड़े खड़े भी I can press Alt C to create यहाँ पे Alt C करो तो नया group creation screen आ जाता है just wanted to show you okay so current capital partner activate interest calculation yes as per deed समझो 12% है तो 12% 365 days all balances and यहाँ पे वैसे ये रेगुलर की जगह पे अननोन या तो कंज्यूमर लिखना चाहिए वो you should take care when you are creating control R Mr. A partner current capital active interest calculation yes 12% 365 day या कैलेंडर जो आपका होगा वो हिसाब से whatever you decide Are we getting it? So हमने क्रिएट किया लेजर्स मैं वाउचर एंट्री में से भी मैं जाके कर सकती थी और यहाँ फिर से मैं अभी डिस्प्ले अकाउंट लेजर में जाके डुप्लीकेट एंट्री दिखाई फिर मैं मेन गेटवे ऑफ टैली पे आके आपको ग्रुप क्रिएट करना सिखाया ग्रुप के अंदर से हमने लेजर भी क्रिएट कर लिए अब हमें वाउचर क्रिएट करने पड़ेंगे बराबर से वाउचर्स ना वाउचर्स में ऑब्वियसली कैपिटल लाएंगे पार्टनर्स ब्रिंग करेंगे या सम पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी करेंगे तो जर्नल के थ्रू एंट्री होती है सो
नीड बी, आप यहाँ पे बैंक में रिसीव करो, पहले तो फिक्स कैपिटल आएगा, से 50,000 डालना है, उसको डाल दिया उसने, उसने ई फंड ट्रांसफर किया, क्या किया, दैट इज अप टू यू, वट एवर यू नीड टू राइट, जस्ट डू इट। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल आर कर नहीं चल रहा है, अगर हम F12 करके इसको डबल एंट्री करते हैं ना, सिंगल एंट्री की जगह पे यहाँ चेंज मोड भी है, आई कैन हैव अ डबल एंट्री सिस्टम। जिनको डबल एंट्री अच्छी लगती है, मैंने यहाँ चेंज मोड में जाके वो चेंज किया, राइट हैंड साइड पे कंट्रोल H इज द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग द मोड ऑफ द वाउचर। जिनको सिंगल एंट्री नहीं अच्छी लगती है, दे कैन सिंपली चेंज द मोड। तो रिसिप्ट आई है तो किससे आई है, वाउचर्स, अब अभी डबल एंट्री मोड में आ गया है। सो हु हैज मेड मी द पेमेंट, तो अभी कंट्रोल आर चलेगा। मिस्टर ए से मुझे आया था पैसा, तो मैं मिस्टर बी से लेना चाहती हूँ। आई जस्ट वांटेड के डबल एंट्री में वो कंट्रोल आर फीचर इज फंक्शन इज वर्किंग, व्हाटएवर। 50,000 दोनों का इक्वल पार्टनरशिप है तो 50,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे डालना पड़ेगा। चेक से आया है तो 1 2 3 4 5 6 लिखो। तो बेसिकली करंट भी आना चाहिए ना, तभी तो आपको इंटरेस्ट का फीचर समझ में आएगा। मिस ए आपको आदत है वो हमेशा हमें वो भेजते हैं, और हमारा इनको आदत है चेक देने की, इनको चेक। ये सब है, वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एजुकेट योर स्टाफ सो दैट यू गेट बेनिफिट। अब जैसे ही यहाँ पे कुछ प्रेस करोगे वो सीधा लेके आ जाएगा लिस्ट। HDFC बैंक का चेक था तो डाल सकते हो, बैंक वी डोंट नीड टू मेंशन, टैली वहां से उठा के। अभी समझो कि विड्रॉल भी डाल देते हैं, कभी क्या होता है लोगों को समझना है एडेड रिड्यूस मनी, दे विड्रॉ द मनी आल्सो, सो F5। सो मिस्टर ए करंट में से F2 17 मई को मिस्टर ए ने 20,000 ले लिया टू बैंक ऑफ बड़ौदा। या वो अभी देखो चेकबुक था तो देखो चेकबुक प्रिंटिंग और 102 लेके आया, 2 नंबर का चेक वो खुद लेके आया। इफ आई एम गिविंग द चेक, सो नाइस, आई डोंट नीड टू टाइप आल्सो, दैट इज द ब्यूटी। तो चेकबुक को तो ऑटोमाइज कर ही देना चाहिए, और नंबर भी अच्छे से उसमें आ जाएगा तो कितना अच्छा हो जाता है ना। तो ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, बाद में अगर आप पार्टनर सैलरी डालते हो तो वो जेबी मार के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑटोमेटेड नंबर 3 हैज बीन कम, और अगर आपको 2 में से देना है तो वैसे आप दे सकते हैं। अगर मैं 2 सिलेक्ट करूंगी उसमें से एक भी चेक यूज नहीं हुआ है तो फर्स्ट चेक नंबर बाय डिफॉल्ट टैली विल पिक अप। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैली चेकबुक कॉन्फ़िगरेशन। I simply like it, you know. So let us now explore the report. So we'll go to display. I pressed S, you know, statement of accounts, and then interest calculations. Now interest receivables. F12, group wise, detail, control A. इसका F12 क्या है, group wise ही है. Okay. Shift enter किया हाँ मैंने वहां जाके, यहाँ पे रिसीवेबल है, FD पे रिसीव होगा, पेबल होगा लोन पे और करंट कैपिटल पे। शिफ्ट एंटर, आई एम यूजिंग शिफ्ट एंटर टू ड्रिल डाउन।
चेंज व्यू में जाके देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन वो लोग नहीं है लेजर वाइज, तो सीधा ऐसे आता है लेजर वाइज। इंटरेस्ट पेएबल ऑल्ट F1 एंड देन अगर यहाँ पे ये ड्रिल डाउन नहीं है तो शिफ्ट एंटर करके आप ड्रिल डाउन कर सकते हो। मुझे वो शिफ्ट एंटर भी आपको बताना था, so that's why that shortcut keys whenever it is condensed mode then shift enter करना है, कंट्रोल एंटर। ये ऐसा कब होता है? मुझे लगता है ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर, नो है। अगर यस कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, अब इसको मैंने सेव कर दिया, अभी इंटरेस्ट पेबल में जाके ऑल्ट F1 कर दिया मैंने, तो आना चाहिए। मुझे लगा ये ऑटोमेटिक इट विल फॉर्मेट, so okay it will once again I will show you alt F1 F12। now यहाँ पे देखो expand all levels in detail format, yes किया, नीचे भी यस है, वहां से भी आप कर सकते हो। शिफ्ट जहां पे एक्सपैंड इन ऑल फॉर्मेट्स यस करने के बाद भी नहीं होता है तो शिफ्ट एंटर इज द शॉर्टकट कीज, शिफ्ट एंटर। ओ समीका थैंक यू। मतलब दिस आर द शॉर्टकट्स। आज का वो सेशन का हेडिंग भी था ना कि देयर आर सो मच इनहेरेंट शॉर्टकट which you will know only when you are using it, you know. एक मिनट, give me a minute. Okay, so give me a minute why I have just run through this. I wanted कि I can show you certain more shortcut keys day to day जब हम use करते हैं। मुझे अभी आपको ऐसी एक कंपनी देनी चाहिए जहाँ पे कुछ वैल्यूएशन होता है, प्रोडक्ट सेल होता है, ऐसी कोई कंपनी खोलनी पड़ेगी अपने को। Let me get some company for you where we have a valuation. बहुत डिफिकल्ट होता है ना कभी कौन सा डेटा शेयर करें। मुझे पता नहीं है कि इसमें डेटा होगा या नहीं। अब यहाँ पे एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, वैल्यूएशन में वैल्यूएशन हम लोग स्टॉक ही नहीं रखते हैं, स्टॉक नहीं रखते उस कंपनी का मतलब नहीं है। Okay, let us explore something. Alt F3, specify path, Control V, enter. वैसे टेली के सैंपल डेटा डेमो डेटा होते हैं, लेकिन फिर वो उसमें वो रहेगा नहीं रहेगा जो मुझे अभी दिमाग में आया। लाइक सी व्हाई गो टू बैलेंस शीट, हम लोग को ना वो आदत है रिपोर्ट्स क्वार्टरली देने की, पता है ना, क्वार्टरली रिपोर्टिंग होता है हम लोग का। क्वार्टरली रिपोर्टिंग अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे जाके आप लोग, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है ऑल्ट सी करके, यहाँ जाके आप लास्ट ईयर का हम करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा हम लोग काफी सारे लोगों ने देखा होगा। ऑल्ट सी करके हम प्रीवियस ईयर डाल के कंट्रोल ए करके ऐसा कंपैरेटिव्स देखते हैं कि भैया लास्ट ईयर ये था, इस साल ये है, तो मोटा मोटा सब ओके ओके ओके, दिस डन, understood the comparisons which you are doing like this. Now, there is one more feature in Tally, which is Alt N. If I press Alt N, it gives me 4-week month, company, daily,
मीन्स किसके साथ आपको वो कंपैरेटिव करना है. जिनको क्वार्टरली रिपोर्टिंग होता है तो जस्ट प्रेस क्वार्टरली एंड सिंपली एवरीथिंग क्वार्टरली कम्स. बैलेंस शीट में देखो, पीएनएल में देखो, हर जगह पे आपको ये फीचर मिलेगा. आई थिंक दिस इज, आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल रिपोर्टिंग. ऑल्ट F1 कर दिया, एक्सेल में डाल दिया, आपका क्वार्टरली रेडी हो गया. ये हो गया मेरा 21-22 का क्वार्टर. अब मुझे ऐड करना है, यहाँ पे ऑल टाइम में कंपनी भी था, तो सीधा ये मेरे को उसने वो लेवल पे कर दिया. मुझे वो नहीं चाहिए. ऑल्ट एन मुझे क्या चाहिए था, क्वार्टरली मेरा हो गया. ऑल्ट सी किया मैंने और फिर मैं प्रीवियस ईयर डाल दूं. तो इसको मुझे अगर क्वार्टर वाइज चाहिए तो वो होगा कि नहीं, दैट वाज माय क्वेश्चन एक्चुअली. वो अभी तो पूरे साल का ही आएगा ना, ये पूरे साल का आ रहा है ना, लास्ट जो है ना. और यहाँ पे 31 मार्च 22, जून, सितंबर 21, 31 मार्च 22 एंड वो पूरे साल का आ रहा है, मतलब पूरे साल का. तो क्वार्टर वाइज मुझे चाहिए तो मेरा जो ऑडिट का है वहां पे अपने को मिलेगा जब हम ऑडिट सेशन लेंगे लास्ट 5th में को. बट एटलीस्ट करंट ईयर का ऐसे किया तो यही स्क्रीन पे अगर हम पहले से ही बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F2 करके लास्ट ईयर ले लेंगे तो आपका एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा. फोटो कॉलम क्वार्टरली डन. तो पहले आपने ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करके ऑल्ट F1 करके और बाद में वो 21-22 का आप करो. So I think that can resolve our questions. Even in profit and loss. Now profit and loss में basically इसमें अपन देखते हैं F11 में integrate accounts with inventory no है. Right now it is no. So no means manually you are putting the closing stock figure. Yesterday I told ना, तो देखो स्टॉक इन हैंड करके एक लेजर क्रिएट किया है अंडर स्टॉक इन हैंड ग्रुप. एंड देन यू एवरी ईयर एंड साल डेट डालना है और वहां पे हाथ से फिगर डालना है. ओके, सो वट एवर मे बी योर स्टॉक यू कैन शो. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड यहाँ पे अगर हमारा इंटीग्रेटेड नहीं रहता तो स्टोरी कुछ और ही होती थी. वो पूरा चेंज हो जाता है. अभी ये देखो एक्चुअल स्टॉक कितना है, ये फाइनलाइज डेटा नहीं है बट यू कैन सी द डिफरेंशियल. अब मुझे इसकी वैल्यूएशन चाहिए, समझो क्लोजिंग स्टॉक की. तो टैली में ऐसा एक फीचर है, आप यहाँ से ऑल 10 में जाके स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को सिलेक्ट कीजिए. तो इट विल शो यू विद द डिफरेंट मेथड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ 4480 है, दिस इज डिफॉल्ट. फिर फीफो में 4489 है, लीफो में 4496 है, लीफो एनुअल में 4474 है. तो टैली गिव्स यू द डिफरेंट काइंड ऑफ एवरेज कॉस्ट में कितना है. अभी देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 95 lakhs भी हो रहा है. सो वैल्यूएशन मेथड कैन चेंज योर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन. दैट्स आई जस्ट वांटेड टू शोकेस यू. एंड यहाँ पे देखो उनका 1 crore 44 भी जा रहा है. सो वट एवर प्राइस लेवल यू आर हैविंग अकॉर्डिंगली द प्राइस विल डिफर चेंज. कौन सी मेथड आप फॉलो कर रहे हैं. आर यू एबल टू गेज 144 1 crore 68 lakhs. तो हम जो मैन्युअली डाल रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है. देयर इज अ बेसिस ऑन विच द क्लाइंट इज डिजाइनिंग डिफाइनिंग, क्योंकि इसकी n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, n नंबर ऑफ दिस थिंग. So we need to now bring it back. So whatever it was, it will restore. So just wanted to show you कि what was. अभी ये देखो ये तो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, क्योंकि मैंने अभी तक 22 तो क्लोज ही नहीं किया है. So I will have to close the 22. So how valuation can take place, that is I wanted to showcase. Alt N करके stock में जाके valuation methods you can have.
यू कैन चेंज, मतलब वो खाली वैल्यूएशन के लिए मैं बता रही हूँ, वो तो जब लेजर क्रिएट स्टॉक आइटम क्रिएट होती है ना उसी टाइम पे आपको वो करना रहता है मेथड व्हेन यू क्रिएट, वो अभी इन्वेंटरी में हम लेंगे. सो नाउ वी कम बैक टू दी सेव व्यू फीचर. we have 20 minutes and save view features are will take 20 minutes. scenarios save view में बहुत सारे save views हैं. ज्यादा करके देखो हम लोग ट्रायल बैलेंस लेते हैं. सबसे पहले हमारी ट्रायल बैलेंस कैसी दिखती है, आप लोग जाते हो ऑडिट करते हो डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, मेरे में तो ऑलरेडी सेट है सेव व्यू, ऐसा नहीं दिखता है, वो खाली आपको क्लोजिंग में दिखता है. तो मेरे को अभी जाके ऑल्ट जी, यहाँ पे मैं आ गई, मेरा सेव व्यू, मेरी ट्रायल, देखो ट्रायल बैलेंस मैंने ड्रिल डाउन करके रखा है, दिखता है. तो मैंने कैसे किया था, यहाँ पे देखो जैसे आपको चाहिए, आप हम लोग को कैसे चाहिए F12, you have to define on the screen, yes, show transaction, yes, then closing balance, yes, then group wise, then detail, then expand all levels in detail format, yes, and then default method, and then मैं यहाँ पे जाके save view करती हूँ. ट्रायल बैलेंस ड्रिल डाउन, सेट दिस एज अ डिफॉल्ट, मुझे डिफॉल्ट ऐसा ही चाहिए इसलिए मैंने डिफॉल्ट कर दिया. आप नो भी कर सकते हो, अगर हम इसको नो कर देंगे तो वैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि वही मुझे दिखाना है वो नहीं दिखेगा. एंड ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर, और यू हैव ऑप्शन दिस कंपनी, कंपनी स्पेसिफिक आप सेव व्यू कर सकते हो. This is designing your report in your own way. That is coming, this feature is enabled in Tele Prime. Save with master selected for the to open the report, yes कर सकते हो. Save with the selected period, अगर आप लास्ट ईयर का ऑडिट कर रहे हो 21-22 का, और फिर तो आप ट्रायल बैलेंस पर 21-22 फ्री, मतलब वही देखना है जब भी रिपोर्ट, मेरे को जाके पीरियड भी चेंज नहीं करना है, तो आई कैन सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड. अभी मैंने नो लिखा है, अभी एक बार मैं बाहर निकल जाती हूँ, अब मैं ट्रायल बैलेंस में गई. दिस इज हाउ इवन द क्लाइंट सेंड्स यू द ट्रायल बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस ऐसे भेज देता है. This is not what we look at. You know, as a chartered accountant, we want to see the what transaction happened. And I first thing I will tell you with the my last year audited balance sheet is matching opening balance or not. So that is what I am looking at. So अब ये देखा, मैंने वो नो करके आपको बताने के पीछे वजह ही ये थी कि आप जनरली जब देखते हो डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस एंड इट कम्स लाइक दिस ओनली, एंड देन यू कीप ऑन चेंजिंग द पीरियड. अब जाओगे यहाँ पे डालोगे, मेरे को लास्ट ईयर का समझो क्लोजिंग करना है, मैं ऐसे डालूंगा, फिर ये दिखेगा, ऑल्ट F1 किया तो ड्रिल डाउन हुआ. इसके बाद भी मैंने जैसे बोला था शिफ्ट एंटर करोगे तो ऑल इट गोज डाउन, शिफ्ट एंटर, या मैं F12 करके पहले यहाँ पे एक्सपांड यस करके कंट्रोल A करूँ, तो जितना वो कर सकता है वो करेगा, उसके बाद मुझे करना पड़ता है शिफ्ट एंटर, आई एम एक्सपेंडिंग. और ये एक्सपेंशन मोड में ही क्लाइंट से हमें आनी चाहिए. कभी भी ट्रायल बैलेंस वो टेली डेटा कोई नहीं शेयर कर रहा है तो वी मे आस्क देम टू गिव अस इन दिस फॉर्मेट. शिफ्ट एंटर करके बोलो और पूरा ड्रिल डाउन करो और फिर हमें भेजो, अदरवाइज इट विल नॉट मेक एनी सेंस. तो इसमें भी ट्रांजैक्शन तो है ही है, ऊपर देखो हेडिंग ही है क्लोजिंग बैलेंस है. तो मुझे समझो मेरा सेव व्यू कैसे चाहिए, तो आई विल हैव F12 शो ओपनिंग, यस यस कंट्रोल A, एंड यहाँ पे मैं सेव व्यू में जाऊंगी, ट्रायल बैलेंस माय व्यू, या आप जो भी नाम देना चाहिए, ड्रिल डाउन, फिर सेट डिफॉल्ट, यस, शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, यस यस किया तो ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर, यस, सेव विद द मास्टर सिलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट, यस, एंड सेलेक्टेड पीरियड. और वो मुझे पूछ रहा है कि ऑलरेडी है एक्सेप्ट, यस आई विल रिप्लेस, बिकॉज मुझे तो यही फॉर्मेट अच्छा लगता है, तो मैं जब भी खोलूं मुझे वो F12 करके यस 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 वो उतना मेरा, आई वांट टू सेव ऑन माय टाइम, आई विल रिप्लेस. So whenever I will open like this only. So hope you understood. This feature will work for whatever reports you want to save. Like मुझे ग्रुप समरी भी चाहिए, आपने देखा होगा यहाँ पे देखो मैंने डिटेल्ड ग्रुप समरी सेव करके रखा है, और उसमें जाके मैं अगर सन्ड्री डेटा भी टाइप करती हूँ तो मेरा दिस वे इट इज कमिंग. ऑल्ट F1 सिर्फ मुझे करना है उसको पूरा, वो उसके हिसाब से ओपनिंग ट्रांजैक्शन क्लोजिंग मैंने सेव करके रखा है. अब नॉर्मल टैली में जाके, खुद का टैली में जाके भी अभी देखोगे तो खाली क्लोजिंग बैलेंस ही दिखाता है. अंडरस्टूड? मैंने वो अपने हिसाब से बना के रखा है कि मुझे ट्रांजैक्शन चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड.
आर वी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? और वो ऑल्ट जी में ऊपर सेव व्यू ये पार्क होते जाता है, और यहाँ पे वो दिखाता भी है ऑल कंपनीज। जितना चाहिए वो आप बना सकते हो, नहीं चाहिए तभी आप जाके फिर उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सेटिंग्स डिलीट व्यूज सेव्ड फॉर दिस कंपनी, वो ट्रबल शूटिंग में है, उन्होंने रखा है डिलीट व्यू सेव्ड फॉर दिस कंपनी, तो आप कर सकते हैं। तो बनाएंगे अच्छे से। अच्छा, नाउ वी एज ऑडिटर गो फॉर अ 3CD वोट, एनी ट्रांजैक्शन मोर देन 10,000 इन कैश, अगर वो चाहिए तो वो रिपोर्ट कैसे मिलेगा अपने को? 10,000 से ज्यादा वाला कोई रिपोर्ट है कि नहीं रिसीट या पेमेंट का? अगर आपको चाहिए तो हाउ विल यू डू इट? आप हर टाइम जाके डिफाइन करते रहना पड़ेगा, उसकी जगह पे आप सेव कर सकते हो वो ट्रांजैक्शन को, सेव व्यू करके आप सेव कर सकते हो। अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करता हूँ, जनरली डिस्प्ले अकाउंट कैश बुक में जाके आप लोग चेक करते हैं, कैश बुक में जाके यहाँ पे F2 ब्लैंक टू ब्लैंक करते हो, फिर ऑल्ट F12 वाउचर्स हैविंग लेजर्स अमाउंट, आप ऑल्ट F12 किया मैंने, ऑल्ट F12 वाउचर्स हैविंग लेजर अमाउंट विथ ग्रेट अमाउंट ग्रेटर देन से 10,000, वो चाहिए ना मेरे को, तो मुझे इतना सारा ट्रांजैक्शन आ गया। बट नाउ बैंक ट्रांजैक्शन ऑल्सो विल कम, सो अगेन आई हैव टू हैव अ फिल्टर के ये वाला नहीं चाहिए ना वो वाला नहीं चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे फिल्टर में क्या होना चाहिए मेरा, आई वांट ओनली क्रेडिटर्स और डेटर्स, बैंक नहीं चाहिए, इन शॉर्ट मुझे बैंक नहीं चाहिए ना, बाकी किसी से आया तो मुझे तो दे चाहिए ही चाहिए। And voucher having ledger with group name not containing बैंक। अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, हम मैंने एंड करके डाला है ग्रेटर देन 10,000 एंड हैविंग लेजर्स विद ग्रुप नेम विथ नेम नॉट कंटेनिंग बैंक। देखते हैं रिपोर्ट क्या लाके देता है अपने को। तो इट इज रिड्यूस द ट्रांजैक्शन, और जो पेमेंट हुआ है एक्सपेंसेस, अभी सैलरी लेजर को किया है तो ठीक है, और 10,000 राउंड फिगर किया है, तो हम लोग यहाँ पे जाके इसको 10,000 बंद कर देते हैं, हमें उसके ऊपर का चाहिए मोर देन 10,000 salary also. So I'm drilling down. After doing this exercise, I can save this bill. Ledger vouchers greater than 10K. ये डिफॉल्ट तो नहीं चाहिए मुझे रिपोर्ट, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन यस कर सकता हूँ अगर जो भी कंपनी का मुझे 10K का ऑडिट करना है, या दिस कंपनी आई कैन डू, दिस कंपनी ऑल्सो आई कैन स्पेसिफाई, एंड मास्टर सिलेक्टेड यस करके सिलेक्टेड पीरियड यस। अभी मैं 21-22 का ऑडिट कर रही हूँ तो आई कैन सिलेक्ट द पीरियड ऑल्सो, और आई कैन चेंज द कीप इट ओपन, तो जब भी जो भी साल का देख रहे हैं वो मेरे को वो दिखते रहेगा ऐसे। अब ये हो गया, निकल गए बाहर, पूरा जो फिल्टर मारा था उसको हमने सेव कर लिया। अभी तो कहीं पे जाओगे तो कुछ है ही नहीं, डिस्प्ले अकाउंट कैश बुक, फिर से सेम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बट अगर मैंने ऑल्ट जी किया, अब मैंने सेव व्यू किया था ना ग्रेटर देन 10K, यहाँ पे मैं जाऊंगी लेजर वाउचर्स, वो सीधा मुझे कैश में ले गया ब्लैंक टू ब्लैंक, वो पूरे साल का मुझे दिखा देगा। आर वी गेटिंग? इट विल सेव माय टाइम, वन टाइम एक्सरसाइज करके वो मेरे को आगे आगे की लाइफ मेरी इजी हो जाएगी। तो इट इज सेविंग ऑन टाइम। आई शोड यू 10K, फिर आप आपके जो डायरेक्टर्स रहते हैं उनको तो स्टॉक का वैल्यूएशन या प्रॉफिटेबिलिटी में ही इंटरेस्ट है, आप स्टॉक क्वेरी को भी एज अ रिपोर्ट सेव करके रख सकते हैं। मैं जाऊंगी फॉर एग्जांपल स्टॉक समरी में मैं गई, एंड आई वांट डायरेक्टर टू सी द ओनली, ये ऐसा वाला रिपोर्ट नहीं चाहिए उनको, चाहिए मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था, ट्रांजैक्शन क्या था, आउटवर्ड क्या था,
फिर मुझे कंजम्पशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, यू नो. सो देन I can just save it like this, and this can be my save view. So whenever उनको बोलना है, जैसे ही टैली चालू किया, आपको तो सिर्फ यही देखना है, स्टॉक समरी, डायरेक्टर व्यू, या जो भी उनका नाम है, आपको वो नाम से आप सेव करके रख सकते हैं. एडिशनल ऑल कंपनीज या दिस कंपनीज, एंड मास्टर अगर आपने सिलेक्ट करके सेव कर दिया, कर दिया. तो अभी वो जब भी यहाँ से निकल गए, हम वापस आए, ऐसे कंपनी में कहीं पे भी खड़े, ऑल्ट जी किया. ऑल्ट जी करने के बाद हमने जो नाम दिया, स्टॉक समरी डायरेक्टर व्यू, मैंने पहले मैनेजर व्यू बनाया था, तो स्टॉक समरी डायरेक्टर व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे वो आ जाएगा. आप पीरियड चेंज कर दो, जो भी आपको देखना है, 1 अप्रैल, 1 to 31 बाय, जो देखना है वो जिस हिसाब से देखना है आप देख सकते हो. दैट इज अप टू यू, वॉट एवर पीरियड यू वॉन्ट टू सी. तो उनको जो भी देखना है वो उनके रिपोर्ट आप सेव करके रख सकते हैं डायरेक्टर के लिए. दिस इज आई थिंक सेव व्यू इज बेस्ड ऑन द यूजर्स चॉइस. आपको जिस हिसाब से उनको सेव करना है आप कर सकते हैं. तो सिखाने के लिए तो इतना सारा रहता है. मैं आई ऑलवेज ट्राई टू कवर वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू. वी लर्न सी यस्टरडे कंपनी क्रिएशन पार्ट था, F11 फीचर सीखे. और दूसरा, जब भी हम वाउचर एंट्री भी कर रहे हैं ना, यहाँ राइट साइड पे F12 कॉन्फ़िगर को भी देखते रहिए. जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मिलती रहेगी. यहाँ पे चेंज मोड भी है, मोर डिटेल्स है. मोर डिटेल्स मीन्स जब हम जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन जो भी डालेंगे वो हमको वहां पे मिलते रहेगा. तो साइड में बहुत सारे उन्होंने अभी जो भी मेनू है वो साइड में ड्रिवन कर दिया है. ओके. Anyone has any question? पिंकी आज निकल गए मैडम? So we were on F11. हमने feature is enabling anything you want to enable. F11 needs to be worked out. Then we learned कि whichever bank you want to start auto bank reconciliation, आप अल्टर में जाके भी कर सकते हैं, या जहाँ जो स्क्रीन पे खड़े वहां पे बैंक अकाउंट पे कंट्रोल एंटर करके भी चेंज कर सकते हैं. फिर जब भी आपको कुछ ड्रिल डाउन करना है, शिफ्ट एंटर है. रिपीट करना है तो कंट्रोल आर है, और स्क्रीन से गायब करना है तो भी कंट्रोल आर है. सो दैट आर द शॉर्टकट कीज अवेलेबल. आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट सीखा, बिल्स पेबल भी सीखा कि अगर 2-3 बिल का भी पेमेंट एक साथ में करना है किसी का, समझो कि डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग, we wanted to see statement of account payables में अगर मुझे काउंटिंग देखना है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर प्रॉब्लम यही है, एक ही एंट्री है, क्योंकि मुझे जो दिखाना होता है बिल वाइज, अगर मैं आपको वांटेड टू शो यू बिल वाइज ना, 4-5 बिल का एक साथ में. तो हाँ देखो, यहाँ स्पेस बार दबाया, फिर स्पेस बार दबाया, तो देखो यहाँ पे काउंटर आता है, टोटल होता है. तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ पेमेंट, यहाँ पे ये 3 बिलों का मैंने सिलेक्ट किया, फिर सेटल बिल्स, और समझो कि मैंने ऐसे 31 मार्च करके डाल दिया. तो दिस हाउ द ट्रांजैक्शन, द टैली विल ब्रिंग दैट. आपको अगेंस्ट रेफरेंस कुछ टाइप करना नहीं है. दिस इज द बेस्ट what I can say you will settle bill feature Tally has created.
are using or not, I don't know, but here it comes, and you can take benefit of this. So anyone has any query? So वो तो सिंपल है, आप पहले एक बार एडजस्ट कर लीजिए, फिर जिसमें कम है लास्ट वाला ट्रांजैक्शन को आप एडजस्ट कर दीजिए। मैंने भी अभी टीडीएस कट के आता है डेटर्स में भी, मैंने 5 बिल का ले लिया एंड टीडीएस कटा है, तो पहले मैं वो फिगर ले लूंगी, फिर वहां पे बैंक में जितना आया वो बैंक टीडीएस वाले किस्से में तो इश्यू है ही नहीं, क्योंकि आप नीचे जाके माइनस टीडीएस का एंट्री कर सकते हो, टीडीएस करके माइनस कर दो वो फिगर में से, तो वो अगेंस्ट बिल रेफरेंस एडजस्ट हो जाएगा। पर समझो 5,000 ऑन अकाउंट आया है एंड आई वांट टू यूज दिस फीचर, देन हाउ? आई थिंक दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। So suppose I take you, just giving you an example. समझो ये यहाँ पे एंटर किया, अभी ये 4612 हो रहा है, ओके, बट ही हैज गिवन मी 4500. हर क्वेश्चन इज दैट थोड़ा सा कम आया ज्यादा आया, सो आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ वन कैन ओवरकम दैट। तो मुझे पता ही है 4500 आया है, तो आई नो इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो हियर एंड मेक द ट्रांजैक्शन 4500, और फिर मुझे ये 249 में से वो माइनस करना पड़ेगा, एंड आई विल, मैंने नीचे जाके ऑल्ट सी करके कैलकुलेशन किया कि मुझे टोटल 4500 आया, नीचे वाला का 4363 है, तो बैलेंस फिगर मेरा उधर एडजस्ट कर दूं ऐसा। तो दैट इज व्हाई वेयर द कैलकुलेशन कम्स, नाउ वी आर द मास्टर ऑन दैट, अंडरस्टूड। और फिर सेव करो, मुझे सेव नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ ट्रांजैक्शन, बट अंडरस्टूड, मुझे वो सिलेक्ट करना मगजमारी नहीं, वो एडजस्ट करो। और ये तो मैं 2 बता रही हूँ, जिनका ज्यादा आता है उनको तो ये बून है, दिस फीचर, सेटल बिल्स, अंडरस्टूड। So I hope I have done justice to different scenarios, save view आप एक्सप्लोर करो, जितना आप कर सकते हो, the sky is the limit save view में। तो मैंने एक रिवर्सिंग जर्नल बोला था आपको, रिवर्सिंग जर्नल कब यूज होता है मालूम है? जिनका क्वार्टरली रिपोर्टिंग रहता है। अब मुझे डेप्रिसिएशन है, मुझे एंट्री पास नहीं करनी है, बट उस एंट्री के साथ मुझे रिपोर्ट्स देखने हैं, तो मैं डेप्रिसिएशन की रिवर्स जर्नल मार सकती हूँ। It will be a journal entered by me but not reflected in my main books of account. That is the what reverse journal actually works like. अभी इसमें शायद कुछ फिक्स असेट है कि नहीं मुझे पता नहीं है कंपनी में। there is a computer, समझो। अब मुझे यहाँ पे कंट्रोल N 23,565 इंटू से अपना 15% होता है पूरे साल का 3534 डिवाइड बाय 4, तो 885 रुपीज रफली मुझे कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है। क्वार्टरली रिपोर्टिंग जब हम करते हैं उसके लिए रिवर्स जर्नल यूज होती है। तो हम जाएंगे ऑल्ट ए, मुझे F2 एक मिनट, प्लीज जून में ही हूँ मैं, अदर वाउचर्स, उसमें अदर वाउचर्स मैंने राइट साइड में अदर वाउचर्स में से रिवर्सिंग जर्नल आई विल पिक अप, से डेप्रिसिएशन under expenses indirect, not applicable, not applicable, not applicable, सेव कर दो। और मेरे को 885 लेना था राउंड फिगर सपोज, एंड 2 मेरा समझो लैपटॉप, तो ये एप्लीकेबल अप टू 30 जून 21, दैट दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन से क्वार्टरली डेप्रिसिएशन हो गया आपका सेव। अब एंट्री यहाँ दिखेगी ही नहीं आपके, अरे लिनोवा में डाला था, लैपटॉप लिनोवा, यहाँ पे दिखेगी ही नहीं, तो मुझे कंप्यूटर में डालना पड़ेगा पहले तो ऑल्ट जी, नहीं ऑल्ट जी नहीं, मुझे चाहिए था रिवर्सिंग जर्नल, और मुझे डालना है कंप्यूटर में। I will put it to computer, I will save it। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, आप देख लो,
कंप्यूटर में नहीं दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा, दैट ट्रांजैक्शन इज हवा में है, मतलब दैट इज द फीचर विच इज गिवन बाय टैली कि अगर मुझे रिपोर्ट देखना है P&L प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगी मैं ऑल F2 अप टू 30 जून 21। सो अब मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ पे है इट इज शोइंग कुछ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नाम है बट डेप्रिसिएशन में अमाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड देयर। फिर उसमें एक ऑल्ट सी करके एक्चुअल्स एंड टाइप ऑफ वैल्यू एक्चुअल्स विद पोस्ट डेटेड। अब उसमें मैंने रिवर्स जर्नल इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, अभी जब तक मैंने किया नहीं है, एनेबल नहीं किया है, सो इट विल नॉट कम। आई हैव टू फर्स्ट मेक अ सिनारियो क्रिएट करना पड़ता है आपको, क्रिएट न्यू सिनारियोज। सिनारियो क्रिएट करने के लिए शो मोर, दिस इज सिनारियो, यू नीड टू क्रिएट सिनारियो। आप हम क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट कुछ भी जो भी आपको नाम देना है, इंक्लूड एक्चुअल्स एंड इंक्लूड रिवर्स जर्नल। ठीक है, ये मैंने एक सिनारियो बनाया एंड लेट मी नाउ सी माय P&L। हमारा पीरियड था 30 जून 21, 2765 इज माय प्रॉफिट फॉर एग्जांपल, एंड देन ऑल सी, यहाँ पे अभी मैं क्वार्टरली रिपोर्ट शो वैरिएंस, यस, वाओ आई हैव डन इट, डिड यू गेट इट? यहाँ पे देखो 1880 लेके आ गया, समझा समझा? Did you like this feature? Alt F2, 30th June 21. What I did, Alt C, same period, but I want quarterly report. मैंने देखो स्पेलिंग गलत लिखा पर ठीक है, ये रहा। आप आपको समझ में आया? यहाँ पे देखो वो रिपोर्ट दिखाने के लिए ही आएगा, जो भी प्रोविजंस करते हो रिवर्स जर्नल के थ्रू 30 जून को करो, तो वो टैली में पार्क, इट इज हिडन, इट इज ओनली फॉर सिनेरियो पर्पस। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टैली का, बहुत कम लोग, बहुत, और रिवर्स जर्नल इज राइट फ्रॉम द 7.2, इट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ टुडेज, वो 15 18 20 साल से है टैली के अंदर। पीपल डोंट शोकेस नोर मेक पीपल यूज इट, तो corporates can also use tally prime या tally, so there are so many features available। अरे कोई तो रोको मुझे, 5 बज गया। पिंकी, गुड इवनिंग। यस, मैं वही तो बोला, बहुत कुछ है ऑटोमाइजेशन, पीपल आर नॉट टीचिंग अदर्स। ये जो सिनारियो होने से अपने को फायदा हो गया ना कि आई डोंट नीड टू गो, अभी इसी को एक्सेल में डाल दिया तो काम हो गया ना। सी अच्छा, अभी सिनारियो नाम मैंने, सच में बोलूं तुम्हारे सामने, जस्ट मैंने खुद एक्सप्लोर किया। व्हाट आई डिड, आई वेंट टू क्रिएट के अंदर मैंने सिनारियो में जाके एक नाम दिया, आपको जो टाइप का रिपोर्ट चाहिए वैसे आप उसको नाम दे सकते हो। तो अब मैं जाऊंगी ऑल्टर में, ताकि हमने ऑलरेडी एक सिनारियो क्रिएट किया हुआ है, तो कैसे उसका नाम, रिपोर्ट, नाम आपको जो देना है, आप MIS रिपोर्ट या जो भी लिखना है लिख दीजिए, इंक्लूड एक्चुअल इंक्लूड करना है, और ऑल्सो इंक्लूड द रिवर्सिंग जर्नल जब मुझे रिपोर्ट चाहिए। और फिर मैंने उसको कंट्रोल A करके सेव कर लिया, और इसको सेव कर लिया मैंने, आप समझे? मैंने सेव कर लिया, फिर मैं बाहर आ गई, फिर मैं गई प्रॉफिट एंड लॉस में। हम चाहते हैं ये बैलेंस शीट में भी उसकी इफेक्ट आती है कि नहीं, लेट अस सी। ऑल्ट F2, 30 जून 21। अब आपका फिक्स असेट है 2,13,000, 2,13,000 इज योर फिक्स असेट्स on 30th June. Mark my word, it is applicable on a particular date, 30th June. Then you do Alt C, then you do 30th June and with quarterly report, and then save. So it shows me 2,03,000. Sorry, 2,12,000। आपको ये देखना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आया ना 23 and 22,680, what the difference? तो आपकी, see, it is not coming to my main books of account, it's a reverse journal, it is only for quarterly report they have created this feature in Tally। So
Explore the unexplored. That is my tagline. You know? I have started my YouTube channel, very simplified, by CA Vandana Dodhia. मैं आपको उसका अरे बाबा जर्नल तो सीधा सामने दिखेगा ना मैडम. रिवर्स जर्नल मीन्स वो दिख ही नहीं रहा है. आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप चले जाओ, यहाँ पे फिक्सर साइड में कुछ दिख रहा है. इज नो एंट्री, इज नो एंट्री. बट when I take the scenarios, that time only it reflects me. That is the difference between normal journal and reversing journal. Reversing journal was the idea given ke by for quarterly reporting we need this all depreciation figures, expense figures to be parked and P&L worked out. So थोड़ा automate करके दीजिए. So आप Excel में working तो करते ही हो, तो वही आपने यहाँ पे भी डाला है, तो पूरी बैलेंस शीट यहाँ से ही सीधी एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी ना. फिर विथ एक्चुअल क्या था और आपने जो एडिशनल क्या डाला है उसके अंदर एडिशनल फीचर, मतलब एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन बोलो, प्रोविजन ऑफ सैलरी या वट एवर एक्सपेंस विच वॉज नॉट यू डोंट वांट टू बी डेबिटेड राइट नाउ स्ट्रेट अवे. वो खाली क्योंकि वो खाली आउट ऑफ द बुक्स एडजस्टमेंट्स रहते हैं ना. आप डिप्रेशन तो पूरे साल का एक साल में बाद में एंट्री मारोगे ना, बीच बीच में थोड़ी मारते हैं. और देखने के लिए भी इजी हो जाता है, सिनेरियोस करके आप काम कर सकते हो. ओके, सो नाउ सी यू टुमारो. इतना एक्साइटेड है. अरे कोई तो बोलो वोट ऑफ थैंक्स. Hi, Vandana. Yeah. Who's On this? behalf of WRC, I'm CA Rashmi Lonikar. I would like to offer my vote of thanks. It was indeed a wonderful session, as you can read from the comments. And so many new features you're telling every day, like which we never even explored, and that is going to like ना हम लोग गधा मजदूरी करते हैं. हाँ, So बस मुझे वही बताना था कि बहुत सारी चीजें हैं which can ease your time. फिर हम पढ़ाई पे concentrate कर सकते हैं ना when we automate our work. right. So that is really nice. So thank you so much. And we are looking forward to meeting you tomorrow and hearing and learning from you. Thank you very much. I would like to close this sessions with the thanks. Thank you, Rashmi. Bye, everyone. Bye. Please download and explore. हाँ, घर पे homework करो. Sure, we will.